वीडियो। तो मैं बताने वाला ये हूँ कि मैंने एक वेबसाइट बनाया था और उसको मैं एक रेंडर वेबसाइट पे उसको रन कर रहा था। वो होस्ट है सारे के सारे, सर्वर है वो जो होस्ट करता है और आपका लिंक प्रोड्यूस करता है, जिससे आप किसी को भी सेंड करके अपने वेबसाइट का एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे मैंने ये सारे अपलोड किए वहाँ पे। पहले मैंने इसको गिटहब में अपलोड किए, फिर उसको गिटहब से कनेक्ट किए। कनेक्ट करने के बाद मैंने उसका लिंक निकाला और वो लिंक मैंने सेंड किया। बट जब लॉगिन करने जा रहे हो तो ओटीपी का इश्यू आ रहा है, राइट? मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने ये सब क्रिएट किए, ठीक है। ये सारे कोड्स मैंने क्रिएट किए हैं। ओके, ये सारे कोड्स मैंने क्रिएट किए हैं। अब मैं इसको पहले तो रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। न्यू टर्मिनल पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा पाइथन app.py. Okay, then after I will enter here. Then after when I enter here, it shows me two link, HTTP for two types of links. Okay, so when I click here, follow link, now it will open this interface. Okay, now I will create my account from starting and you will see. Okay, let me create it for for Ayush. Okay, Ayush. Okay, you can write your full name, but I am writing only the one first name. Okay, now here username, so you can put anything. So like I am putting this. Okay, now email ID. So if you have email ID, then you can put here and get OTP. So first of all, let me see, is there any email ID that I can enter it? Okay, so I have, yeah, I have one email ID. Let me enter it first. I can enter this one. Then after writing your email ID, you can write your password, and the password should be 6 digit. Okay, 6 digits. Now you have to write your date of birth. So let me write his date of birth. Okay, after writing, select gender and then write phone number like. Okay, after writing phone number, write your country like India. Okay, then after create account, after clicking here, it will comes to here. Okay, now it will uh, send OTP. Now check your email, and once you get the OTP, just write here. Okay, so I got my OTP. My OTP is 84788. Okay, now verify from here. After verifying here, you can see, let me first close this. You can see it is asking for subscribe required. Okay, so go to YouTube. Get more, pay less. Tune Talk. Then subscribe. Epic Plus 35. One plan, 10 times value. Subscribe this channel. Okay. चालू करते हैं आज का वीडियो। So I already subscribed, so that's why I will close here. If you already subscribed, then it will not ask you to subscribe again. You can close it. But if you didn't subscribe yet, then it will not show you close button and you have to subscribe first. Okay. After this, you can press here and open drive. First, let me close this. Now open drive and you will see your notes here. So this is the video of this website, but there is a problem in the server that is not taking the OTP file to produce OTP in your email. That's the problem. That's why you are not getting OTP. Okay. Thank you. यहाँ दिखाता हूँ कि लॉगिन कैसे करना है क्रिएट करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, वापस से पहले लॉग आउट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, लॉग आउट करने के बाद लेट मी लॉग आउट इट फर्स्ट। आफ्टर लॉग आउट यू हैव टू राइट योर everything that you already created, email and password. Okay, you have to write that same email and password to logging in this website. Okay, so I am writing my email and password here, and after writing the email and password I will click on login button. जैसे ही लॉगिन बटन क्लिक किया, ये वापस से वही चीज़ मांगेगा जो मैंने पिछली बार बताया था। ठीक है, तो इस तरह से लॉगिन कर सकते हो, लेकिन अभी प्रॉब्लम सर्वर में है, इसलिए आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो। कुछ दिन वेट करो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू।